All right. So our first topic is going to be business activity. ठीक है? We need to understand कि business होता क्या है in order to study business studies, right? Business क्या चीज़ है? All right. So I already gave my introduction. I'm Aliza Hyder, and we are going to do chapter one, our first topic on business activity, where we will explore the nature and importance of business in our economy. All right. So what is business activity? Business या business activity क्या होती है? So let's read its definition. Using resources to produce goods and services. Resources अब क्या होते हैं आपके पास? Resources आपके पास किसी भी business के लिए आपके people, आपका money, आपके materials, जो भी चीजें आप use करके कोई goods या service बना रहे हो, that is called resources. राइट अच्छा अब गुड्स क्या होती हैं गुड्स बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है समथिंग दैट यू कैन टच यू कैन फील इट ठीक है कोई भी चीज जो आप टच कर सको फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन योर शूज it's a product it's a good what about services services नॉन tangible है you cannot touch services ठीक है services की एग्जांपल्स हम आगे पढ़ेंगे services would be like I am teaching you so this is a service I'm giving to you ठीक है it's not a product or a good all right so businesses क्यों why do we have business activity we use the resources to produce goods and services and why do we produce goods and services why for our people to satisfy the needs and wants of people we are going to talk in detail about needs and wants in the later slides what are needs and what are wants but अभी के लिए आई थिंक थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट होगा कि एक नीड क्या होती है और एक वांट क्या होती है तो businesses they produce goods and services to satisfy the needs and wants of people and to earn profit yes mostly businesses ka we are going to talk about the private sector and public sector businesses also जो private sector होती हैं उनका तो aim profit होता है right? So this is what a business activity is when we use resources to produce different goods and services to satisfy the needs and wants of people and earn profit. All right, so what do businesses do? Now we have already talked about it that a business produces goods, it produces services, it provides services, it creates jobs. Jobs कैसे create करता है? अब एक business है उसने एम्प्लॉय करना है पीपल को ठीक है लोग जब वो हायर करेंगे काम कराने के लिए तो इट क्रिएट्स जॉब्स and it supports the economy. So what happens when businesses pay taxes to the government usse they can build up hospitals, schools, roads. And जब businesses different चीजें sell करते हैं, so what happens? The economy के लिए अच्छा है, आपकी country की economy के लिए अच्छा है, right? Okay, let's move on. Okay, so this is what I was talking about, needs versus wants. So what are needs? I think needs, the word needs is very clear. It's a clear term that needs. We cannot live without needs, something that we need for basic survival. ठीक है इसके बगैर needs के बगैर हम नहीं रह सकते we need it for survival. For example, food. We cannot live without eating food. Water. We cannot live without having water. Shelter. Your housing. ठीक है आपको घर चाहिए. You cannot just be on a road, right? So we need it for our survival. And clothing. So we need clothing. It's our need. And what are wants? Wants are something that are not needed for basic survival. It's just your desire. Like you want that thing. You can still survive without it, but needs के बगैर you cannot survive. So what are wants की examples? A smartphone, like for example, if you want a smartphone, that could be like I want it, I desire it. A car, some branded clothes, or a game like Xbox, PS5, whatever. So it could be
It's a want. It's like not needed for your survival. You can survive without a game. You can survive without wearing branded clothes. You can just wear normal clothing. You can survive without having a car. Like you can have alternate options, right? You can survive without having a smartphone, but we cannot survive without having food, water, shelter, or clothing. So I hope the difference between needs and wants is clear. Okay, let's move on. Okay, let's move on. Goods and services. All right. So this is also goods की मैंने आपको already थोड़ा सा touch किया था कि what are goods? So ये businesses produce करती हैं goods. So physical products that you can touch. I gave you some examples like a mobile phone को आप touch कर सकते हैं. It's tangible. Clothes, books, shoes, जो चीज आप touch कर सकें. It's like a physical product, right? Those are called goods. And what are services? Services are something that you give to your customers, like activities provided to customers. For example, teaching. I gave you the example of teaching already, that if I'm teaching you, I'm giving you a service. Banking. You go to a bank, वहां पे आप transactions कर रहे हैं, money आप deposit करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. So that is a service industry, right? That's a service business. आपको कोई product नहीं मिल रहा, आपको उनकी services मिल रही हैं. Haircut. You go to a salon, you get your hair cut. So what are you getting? You're getting a service. So this is the difference between goods and services. You cannot touch services, okay? But goods is like a physical product that you can touch. All right. So I talked about कि businesses can be of two types, private and public sector. ठीक है? Private sector के जो businesses होती हैं, वो they are owned by individuals or businesses. ठीक है? Individuals के people can own them, right? And businesses भी होती हैं private sector में. And what is their aim? Their aim is to earn profit. Like for example, uh, private shops or private restaurants, right? ठीक है? Private schools. So their aim is to earn profit. And they are not owned by the government. They are owned by private individuals or businesses. All right. Now let's talk about the public sector. Public sector की जो business होती हैं, they are owned by the government. And government का क्या aim होता है? The government aims to provide services to its people, to help their people, right? तो government का aim होता है कि वो service provide करे अपने people को, so that they can help the people of their country, right? So examples could be a government hospital or a public school, even railways, right? Okay. So I hope the difference between private and public sector is clear. All right. Okay, so now what happens? Now we know कि needs क्या होती हैं, we know wants क्या होती हैं, and we know कि resources क्या होती हैं. So what happens जब आपके पास बहुत limited resources होंगे business start करने के लिए, आपके पास unlimited wants होंगे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, but आपके पास इतने resources ही नहीं है. What happens? There is a basic economic problem. And उससे क्या होता है प्रॉब्लम, क्या होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? Scarcity. Scarcity means कि resources are not enough to satisfy all wants. ठीक है? मतलब स्कार्स हो जाती हैं चीजें, कमी हो जाती है चीजों की, कि आपकी वांट्स इतनी ज्यादा हैं कि आप रिसोर्सेज आपके वो आपकी वांट्स पूरी नहीं कर पा रही. फॉर एग्जांपल, अ फैमिली कैन नॉट बाय एवरीथिंग. मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, मुझे ये भी लेना है, ड्यू टू लिमिटेड इनकम. सो यू हैव टू मेक अ चॉइस. ठीक है? व्हाट हैपेंस हियर? यू हैव टू मेक अ चॉइस. आपको आप यू कैन जस्ट फोकस ऑन द नीड्स, और wants के बगैर तो आप रह सकते हो. So choose wisely. All right. So this is what I was talking about, that people must make choices. ठीक है? And then opportunity cost exists.
We are going to talk about opportunity cost in the later slides. बस मैं आपको एक थोड़ा सा overview दे देती हूँ. Opportunity cost is basically the value of something that you give up to get another thing. ठीक है? ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगी. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक चॉइस की है कि मुझे ये लेना है और वो नहीं लेना, तो जो आपने गिव अप किया है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? We'll talk about it in detail in the later slides. So resources must be allocated. So allocation means कि you must decide कि आपके resources या आपका money कहाँ पे जाना चाहिए. So for example, अगर आपकी government के पास इतना budget नहीं है, it has a limited budget, so it must make a choice and decide कि where is the money supposed to go on building roads, hospitals or schools, right? So allocation उसकी wisely होनी चाहिए. Okay, so affects all economic decisions. What does this mean? Now, what happens is because your resources are limited, now इसमें three types हो सकती हैं. Like for example, individual level pay. So individual level pay, if you have a limited budget and you want to buy a phone, so you can just think about it कि आपने phone लेना है or whether you can just save the money. देन बिजनेसेस लेवल पे, बिजनेस लेवल पे क्या होता है, बिजनेस कैन डिसाइड कि वो लैपटॉप ज्यादा बनाए कि टैब ज्यादा बनाए, टैबलेट ज्यादा बनाए, राइट? एंड गवर्नमेंट लेवल पे तो आई ऑलरेडी गिव एन एग्जांपल, इफ दे हैव अ लिमिटेड बजट, सो दे कैन दे हैव टू टेक अ डिसीजन कि अच्छा, ज्यादा आपका रिसोर्सेज या बजट आपका इन मेकिंग स्कूल्स जाएगा या फिर हॉस्पिटल्स में जाएगा. So it affects all your economic decisions. All right. Now we are going to talk about the factors of production. What are the factors of production? Let's read its definition. The resources, ठीक है, जो चीजें needed to produce goods and services. So now we have learned कि businesses goods बनाती हैं और services देती हैं, ठीक है? तो इसमें क्या चीजें required होती हैं? When you are starting up a business, what are the resources that you need? So you need four things. Land, ठीक है, आपको जमीन चाहिए होती है. अगर आप एक शॉप खोल रहे हो या एक फैक्ट्री खोल रहे हो, you need land. Then you need labor, ठीक है? Labor, you need workforce to work over there, right? Capital. Capital is the starting money, या जो स्टार्ट में आपके पास मशीनरी होती है, आपके पास टूल्स होती हैं, ये जो सारी चीजें आपके पास स्टार्ट में होती हैं जिससे आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर कैपिटल. एंड enterprise जो है वो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है. वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट इट इन दिस स्लाइड, ठीक है? सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लैंड, वी टॉक्ड अबाउट लैंड कि लैंड आपको जमीन चाहिए होती है, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है? आपने कोई भी बिजनेस सेटअप करना है, आपको उसके लिए लैंड चाहिए. आपने एक फैक्ट्री खोलनी है, शॉप खोलनी है, आपको उसके लिए लैंड चाहिए. लेबर, लेबर इज अ ह्यूमन एफर्ट, आपको वर्कफोर्स चाहिए वहां पे काम करने के लिए, काम करवाने के लिए भी, ठीक है? कैपिटल, कैपिटल आई जस्ट टोल्ड यू कि जब स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस में जो भी मनी या आपके पास जो भी मशीन्स होती हैं, टूल्स या बिल्डिंग फॉर दैट मैटर, जो आप बिल्डिंग लेते हो रेंट पे अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, दैट इज योर कैपिटल. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन अप अ कॉफी शॉप, ठीक है, आप सबसे पहले जो बिल्डिंग जहाँ पे आप अपनी शॉप लोगे रेंट के लिए, ठीक है, दैट इज योर कैपिटल. तो आपकी कॉफी शॉप पे आप उसके लिए एक्सप्रेसो मशीन लोगे, तो दैट इज योर कैपिटल, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे कॉफी बनाना, ठीक है? डिफरेंट टूल्स एंड द मनी दैट गोज इन द बिगिनिंग, वो सारा आपका कैपिटल होगा, ठीक है? और जो मनी आप लेटर ऑन अर्न कर दोगे, दैट विल बी योर प्रॉफिट. Okay, so the fourth factor of production is enterprise. Enterprise का क्या मतलब होता है? It means risk taking ability, ठीक है? तो entrepreneurs जो word है, entrepreneurs comes from enterprising. Basically, a person जो entrepreneur होता है वो कौन होता है? Somebody who is the owner of the business, ठीक है? Somebody who takes the risk and he starts up a new business, right? So entrepreneur, I just told you, are people who start businesses, right? And they have this risk taking ability, like it could be an owner or CEO of a company who started the company. Okay. Okay. So I just gave you some examples. A person opening up a cafe or a clothing brand, वो उसका CEO होगा, वो risk taker है, वो नई चीज start कर रहा है, right?
ही इज एन एंटरप्रेन्योर एंड ही इज एंटरप्राइजिंग, ठीक है, उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है. Alright. Okay, now we have another very, very important concept which is called opportunity cost. Okay, now इसका हमने थोड़ा सा पहले मैंने आपको थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू दिया था कि opportunity cost means the next best thing you give up when you make a choice. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? What does this mean? कि जो next best thing आपने ली when you make a choice. Okay, let me give you an example. Imagine if you have rupees 50,000, okay, you can either buy a phone or new clothes, but not both. So what are you going to do? Now, if you choose to buy the phone, what happens? Because you spent the money on the phone, you cannot buy the clothes, right? आपके पैसे अब फोन पे खर्च हो गए क्योंकि आपके पास तो 50,000 था, आप या क्लोथ ले सकते थे या आप फोन ले सकते थे. You chose कि अच्छा चलो मैं फोन ले लेता हूँ. So you did not buy the clothes. Now clothes अब आपकी क्या है? The clothes you gave up are the opportunity cost of buying the phone, ठीक है? Something that you give up. So a simpler definition could be that opportunity cost is the value of the next best alternative, your choice that is sacrificed. आपने sacrifice किया ना, आपने कपड़े नहीं लिए, you bought a phone. So when a choice is made, so that is opportunity cost. Let's read it again. Opportunity cost is the value of the next best alternative that is sacrificed when a choice is made, right? So let's look at some other examples. So for example, if you are watching TV instead of studying, तो आपकी opportunity cost क्या होगी? Studying होगी because you chose to watch TV and not study, so you gave up studying, right? So studying is your opportunity cost. Let's look at another example. If there is a factory and they want to get some land to start up their business, now there is a parking lot, but they do not take the parking lot. Instead, वो ground ले लेते हैं उसके साथ वाला. तो parking lot आपकी क्या होगी? Opportunity cost हो जाएगी. Something that you give up, right? The value of the next best alternative that is sacrificed when a choice is made is your opportunity cost. I hope it's clear. Okay, so let's move on. Our next topic is specialization. Now, I'm sure many of you आपने ये specialization की term पहले भी सुनी होगी. It's not only related to a business field. या हर field में specialization like specialized doctors होती हैं, right? Specialization is when a person and businesses concentrate on what they are best at. So we are going to look at an example. Like for example, if there is a heart doctor, okay, heart doctor is just going to focus on the heart. He's a cardiologist, right? Instead of treating all illnesses. So he's specialized in that field, okay? Now, types of specialization, there can be 4 types of specialization. Individual level पे जो एक person जैसे I just talked about that a heart doctor focuses only on heart diseases instead of treating all illnesses. Now he is a cardiologist, so उसकी specialization he is best at heart, right? That is specialization. तो इंडिविजुअल लेवल पे स्पेशलाइजेशन हो सकती है. देन सेकंड लेवल पे आपकी फर्म लेवल. व्हाट इज अ फर्म? फर्म आपकी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस जब फर्म लेवल पे या फैक्ट्री लेवल पे आपकी होती है स्पेशलाइजेशन, सो दे focus on one product only because they specialize in that, ठीक है. So an example could be a firm या एक फैक्ट्री specialized in producing chocolates, ठीक है. चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री को आप कह सकते हैं अच्छा जी वो स्पेशलाइज्ड है चॉकलेट्स बनाने में. Okay, so the third type of specialization is a region or an area, ठीक है. कोई भी regional या कोई region या कोई area of a country हो, specialized in some products. So for example, पाकिस्तान में सियालकोट, सियालकोट किस लिए specialized है? Specialized in making sports goods, ठीक है. सियालकोट is famous for making sports goods. उनकी specialization ही sports goods में है and दुनिया भर में सियालकोट से even ये जो footballs है ये दुनिया भर में सियालकोट से जाती है, ठीक है. All right. And the fourth type of specialization is national level पे आपकी specialization, ठीक है. अब national level पे आपकी when a country focuses on producing goods or services that is best at that it is best at making, ठीक है. So for example, जैसे Pakistan is a textile country because Pakistan produces a lot of cotton and it has many textile factories, ठीक है.
And example two could be Saudi Arabia. Saudi Arabia is famous for oil. क्यों? Saudi Arabia has large oil reserves. ठीक है? तो सऊदी अरेबिया की स्पेशलाइजेशन ऑयल में है, पाकिस्तान की स्पेशलाइजेशन टेक्सटाइल्स में है. ठीक है? सो देयर कुड बी 4 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. इंडिविजुअल लेवल पे, फर्म लेवल पे या फैक्ट्री इंडस्ट्री लेवल पे, देन थर्ड रीजनल लेवल पे आपके एरिया या रीजन, एंड देन फोर्थ आपकी नेशनल लेवल पे स्पेशलाइजेशन. ऑलराइट. So what are the advantages and disadvantages of specialization? Okay. तो एडवांटेजेस में व्हाट हैपेंस, आप स्पेशलाइज्ड हो किसी चीज में, so आपकी एफिशिएंट प्रोडक्शन होगी, फास्टर आउटपुट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी वो फील्ड है, आप स्पेशलाइज हो उस चीज में. दे विल बी हायर प्रोडक्टिविटी, बेटर स्किल्स आपकी ज्यादा उस पर अच्छी, क्यों? आप स्पेशलाइज्ड हो तो आप जैसे मैं बिजनेस स्टडीज की टीचर हूँ, आई एम स्पेशलाइज्ड इन दिस, सो आई हैव बेटर स्किल्स इन बिजनेस इंस्टेड ऑफ टीचिंग सम अदर सब्जेक्ट. ठीक है? एंड इट ऑल्सो सेव्स टाइम. ठीक है? आप स्पेशलाइज हो उस फील्ड में, आप बजाय इधर उधर जाओ, आप स्ट्रेट स्पेशलाइज्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओ या डॉक्टर के पास जाओ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है. नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज? डू यू थिंक डिसएडवांटेज भी होते होंगे इसके? यस, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस. क्या होता है कि इफ यू आर स्पेशलाइज्ड इन वन थिंग, आप एक ही किस्म का काम किए जा रहे हो, तो व्हाट हैपेंस, वर्क बिकम्स बोरिंग. आप एक ही काम कर, अच्छा मैं बिजनेस पढ़ा रही हूँ, मैं बिजनेस पढ़ा रही हूँ, बिजनेस आ रही हूँ, मे बी वन वन डे मैं भी बोर हो जाऊं कि ओह अच्छा नहीं, आई वांट टू डू समथिंग न्यू. ठीक है? एंड व्हाट हैपेंस, लेस मोटिवेशन. ठीक है? आप एक ही काम, आपको पता है आप स्पेशलाइज्ड हो उस फील्ड में और आप वही आपको आती है, तो आपको इतनी शायद मोटिवेशन नहीं होगी. मोटिवेशन शायद आपकी न्यू चीजें ट्राई करने में हो. So it could be a disadvantage. There could be less flexibility. It absence affects work. So flexibility in the sense कि आपको एक ही चीज आती है, आपको तो बाकी चीजें आती ही नहीं है, तो आप तो फ्लेक्सिबल हो ही नहीं. ठीक है? एंड देन एब्सेंस अफेक्ट्स वर्क. अब एब्सेंस अफेक्ट्स वर्क, किसकी एब्सेंस? अब आप फॉर एग्जांपल आप एक 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 इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो. ठीक है? आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आप अपनी ही फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो. आपको फॉर एग्जांपल इट्स अ ब्रेड की फैक्ट्री है. ठीक है? एंड यू आर स्पेशलाइज्ड कि आपको सिर्फ पैकेजिंग आती है ब्रेड की, जो एंड वाला प्रोडक्ट बन जाता है, आप पैकेजिंग में हो स्पेशलाइज्ड. एंड देयर आर सम अदर पीपल who are specialized in some other things. अच्छा वो let's say for example there's another worker जो कि specialized है in cutting the bread और बाकी चीजें उसको करने में, तो उसकी absence is going to affect work because आपको तो करना नहीं आता उसका काम, आप तो flexible हो ही नहीं, आपको तो सिर्फ अपना काम आता है. So his absence is going to affect work, right? In contrast अगर हम कंपेयर करें कि अगर हमें सारे काम आते हो तो फिर तो एब्सेंस इफेक्ट नहीं करेगी. अगर एक बंदा एब्सेंट भी हो जाए तो आप उसका भी काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसका काम आता ही नहीं, आप तो अपनी फील्ड में से स्पेशलाइज्ड हो, तो फिर एब्सेंस विल इफेक्ट वर्क. राइट? एंड देन सिमिलरली डिपेंडेंस ऑन अदर्स. ठीक है? यही पॉइंट मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. वो बंदा जो स्पेशलाइज्ड है वो जब तक नहीं आएगा, यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम, बिकॉज आपको उसका काम नहीं आता, उसको आपका काम नहीं. राइट? Okay, now let's talk about division of labor. All right, अब specialization or division of labor is different. It's not like कि it's the same. Maybe आपको लगे कि थोड़ा सा मिलता जुलता है, but it's not. Specialization is when you focus on one thing. ठीक है? एक चीज में specialized हो. और division of labor क्या होती है? Division, आप divide कर देते हो labor को कि वो अलग अलग tasks perform करे. नाउ अब स्पेशलाइजेशन तो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट के कंट्री लेवल पे भी हो सकती है, आपकी फैक्ट्री लेवल पे, आपकी रीजनल लेवल पे भी हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकती है, बट डिवीजन ऑफ लेबर तो एक फैक्ट्री के अंदर होती है. ठीक है? यू डिवाइड द लेबर इनटू डूइंग डिफरेंट थिंग्स. ठीक है? So let's read the definition. Division of labor means breaking a job into smaller tasks and giving each task to different workers. So for example, if you're making bread, ठीक है? Instead of one person doing everything, one worker is mixing the dough, worker two
bakes the bread and worker 3 packs the bread. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि तीनों वर्कर्स अपना अपना काम कर रही हैं, ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस, काम जल्दी हो जाता है, इट्स फास्टर, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। बस इसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इट्स आई मीन स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर की advantages, disadvantages are similar, but you need to understand the concept that they don't mean the same thing, right? I hope you understand the difference between both of them. So I just give you an example. Each worker does one specific task. And होता क्या है कि स्पेशलाइजेशन जो है मैंने आपको बताया है कि कंट्री लेवल पे भी होती है, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, फर्म लेवल पे, बट डिवीजन ऑफ लेबर तो होती एक फैक्ट्री के अंदर है, ठीक है। एक एक अगर एक जॉब है उसके अंदर आप डिवाइड कर रहे हो लेबर को। इट्स नॉट लाइक इट्स हैपनिंग एट द रीजनल लेवल या उस तरह से नहीं है। So try to understand the difference. Next comes the topic of adding value. अच्छा जी, adding value क्या होती है? Value आप किस चीज को add कर रहे हो? क्या हो रहा है? Let's see. Okay, when a business adds value, आप किसी चीज में वैल्यू कैसे ऐड करते हो? आप उसकी अच्छी डिजाइनिंग, बेटर डिजाइनिंग कर देते हो, आप उसकी अच्छी पैकेजिंग कर देते हो, थोड़ी सी अट्रैक्टिव बना देते हो, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी आप वो कर देते हो, ब्रांडिंग उसकी थोड़ी सी इस तरह से कर देते हो, तो प्रोडक्ट बिकम्स मोर अट्रैक्टिव एंड इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज एडिंग वैल्यू? आप क्या कर रहे हो? द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक इट। अब आपकी सेलिंग प्राइस, आप किस प्राइस पे बेच रहे हो और आपको उसकी कॉस्ट क्या पड़ी थी विद द मटेरियल्स, राइट? आपने उसके अंदर वैल्यू ऐड की, आपने उसकी अच्छी सी पैकेजिंग कर दी है, आपने उसकी अच्छी सी ब्रांडिंग कर दी है और उसको बड़ा खूबसूरत बना दिया आपने, उसका डिजाइन आपने बहुत अच्छा बना दिया है। सो क्या हो रहा है? यू आर एडिंग वैल्यू टू इट, राइट? So the difference between the selling price of a product and the cost of what materials used to make it, ठीक है, उन दोनों का difference। तो ये मैंने नीचे आप लिख भी दिया है वैसे। ओके, एडिंग वैल्यू क्या है? द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फॉर, ठीक है, जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो और जो आपकी कॉस्ट आई थी वो आपकी एडेड वैल्यू है। Why is adding value important? क्यों हम वैल्यू ऐड करें? क्या हमें क्या बेनिफिट हो रहा है? बिजनेस को क्या बेनिफिट हो रहा है? यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेस, ठीक है। इट इंक्रीजेस प्रॉफिट, ठीक है, आप उसको जरा खूबसूरत बना के बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इट मेक्स प्रोडक्ट्स मोर अट्रैक्टिव, नो डाउट, अगर आप उसकी अच्छी सी पैकेजिंग कर रहे हैं तो वो अट्रैक्टिव भी लगेगा। इम्प्रूव्स कंपेटिटिवनेस, कंपेटिटिवनेस क्या क्या होती है? कि बिजनेस आपका इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन इट्स कंपेटिटर्स बिकॉज इट्स प्रोडक्ट लुक्स बेटर और इट्स वर्थ मोर। आपकी कंपेटिटिवनेस बढ़ रही है। अच्छा भाई, उनका तो प्रोडक्ट आप वालों का तो ज्यादा खूबसूरत है। फॉर एग्जांपल आपकी मिठाई की शॉप है और मिठाई आपके बड़े खूबसूरत डिब्बों में आप पैक करके दे रहे हैं, उसको वैल्यू एडेड कर रहे हैं, तो आपका कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। योर बिजनेस इज गोइंग टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर देन योर कंपटीटर्स बिकॉज आपका प्रोडक्ट ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप मिठाई के डब्बे बड़े खूबसूरत से बना रहे हैं, उसकी कलर्स बड़े ब्राइट रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू इम्प्रूव योर competitiveness also, ठीक है। नाउ देयर इज अनदर एग्जांपल। A plain t-shirt cost rupees 500 to make, ठीक है, एक प्लेन सी टी शर्ट है और उसकी कॉस्ट जो उस पर लगी है वो रुपीज 500 है। नाउ अब एक कंपनी है, द कंपनी एड्स अ लोगो, उस पे लोगो से ऐड कर देती है, एक फैब्रिक उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर देती है और एक खूबसूरत सी पैकेजिंग में उसको पैक कर देती है। नाउ इट सेल्स द टी शर्ट फॉर रुपीज 1000। तो अब क्या होगा? कस्टमर डेफिनेटली विल प्रेफर इट ओवर द अदर प्लेन टी शर्ट्स की, मुझे तो इतनी खूबसूरत चीज है, उसको अट्रैक्ट कर रही होगी वो इतनी, उसको इतना खूबसूरत लोगो, फैब्रिक भी, उसकी क्वालिटी भी बेहतर है, तो आप कौन सा लोगे? आप थोड़े से ज्यादा पैसे देके आप ये वाला शर्ट लोगे, ठीक है, जिसकी क्वालिटी बेटर है, राइट, और जिसका फैब्रिक बेटर है, जिसका डिजाइन अट्रैक्टिव है। अच्छा जी, नाउ हाउ कैन वी ऐड वैल्यू?
देयर आर टू मेथड्स कि हम किसी चीज की कैसे हम उसके अंदर उस प्रोडक्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं वैल्यू। नाउ मेथड वन इज, एक तो आप उसकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो, ठीक है। आप उसको खूबसूरत डब्बे शब्बे में पैक करके, ठीक है, कॉस्ट उसकी सेम रखो, लेकिन उसको आप थोड़ा सा महंगा करके बेचो, ठीक है। आप उसकी सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दो, महंगे दाम बेचो आप उसको। सो फॉर एग्जाम्पल, एक कॉफी की प्राइस है, ठीक है, आपने उसको बड़े खूबसूरत से डब्बे में डाल दिया, उसकी बड़ी स्टाइलिश से कप्स आपने उसके बनाए हैं। सो उसकी प्राइस फिर आप इंक्रीज कर दोगे, फिर 200 और 300 के, वो तो बड़ा खूबसूरत है जी। आप लोग कह रहे हैं जी बड़ा जी प्रीमियम सी कॉफी है, और इसकी पैकेजिंग, इसकी कप्स देखो, इसके कप्स कितने अच्छे हैं और बड़े कप्स हैं। तो व्हाट हैपेंस, अच्छा अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। क्या डाउनफॉल है? दैट द डिमांड में फॉल, ठीक है। अब क्या होता है कि ठीक है, आपने प्राइस तो बढ़ा दी, ठीक है, आपकी कॉस्ट सेम है, लेकिन कुछ देयर विल बी अ सेगमेंट ऑफ पीपल जो कि कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी वो बड़े खुश होंगे, अट्रैक्ट होंगे उस कॉफी को, वो 200 से 300 भी पे कर देंगे। बट देन देयर विल बी सम पीपल मे बी हु वुड लाइक कि हम 300 की क्यों कॉफी ले, है तो फिर ये कॉफी ना। सो डिमांड में फॉल, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज भी हो सकती है कि डिमांड फॉल हो सकती है, ठीक है। आपकी डिमांड उस चीज की कि हमें तो कॉफी ये वाली पीनी ही नहीं है, ठीक है, इसकी तो प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है, हम कहीं और से पी लें, तो आपकी डिमांड उसकी गिर भी सकती है। टू में क्या होगा, दैट योर कॉस्ट इज लोअर, ठीक है, आपकी पीछे से जो कॉस्ट है बिजनेस की, वो चीप प्राइसेस पे चीजें जो है वो ले रहा है, और वो आगे सेलिंग उसी सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। तो कस्टमर में भी, कस्टमर कई दफा अनॉय हो जाता है, कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि ये तो वो वाली क्वालिटी ही नहीं है। आप कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं आपके जो कि कहते हैं कि हमें क्वालिटी दे दो, बेशक हमसे पैसे ज्यादा ले लो। बट देन देयर विल बी दोज कस्टमर्स जो कि कहेंगे कि भाई प्राइस कम होनी चाहिए, मे बी दे डोंट माइंड द क्वालिटी। तो इसका मेथड टू का डिसएडवांटेज वुड बी दैट क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज, यू यूज चीपर सप्लायर्स, या चीपर सप्लायर से आप चीजें रॉ मटेरियल्स वगैरह आप खरीद रही हैं, तो व्हाट विल हैपन, क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज, राइट। ओके, so let's look at some ways to add value. We just talked about them, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में भी हम लोग बात कर लेते हैं। Like you can add value by its branding. आप उसको ब्रांड ऐसे लॉन्च करो कि भाई ये बड़ा प्रीमियम सा ब्रांड है, तो उसकी पैकेजिंग अट्रैक्टिव बनाओ, उसके आफ्टर सेल सर्विस। So if there is a product and you sell it, और वो कोई लेके जाता है और उसको उसमें कोई दुश्वारी होती है या मुश्किल होती है, तो सेल के बाद भी आप उसको अच्छी सर्विस दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक क्लोथिंग ब्रांड है और फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी ने आपसे कोई शर्ट खरीदी है, ऑनलाइन में भी परचेज कर लिया, तो जब उसके पास पहुंचा है तो उसको लगता है कि मे बी उसका साइज ठीक नहीं है, या मे बी उसको कोई चीज़ और उसमें ठीक नहीं लगी, तो आप उसको एक्सचेंज की ऑप्शन दें। आप उसको रिफंड तो खैर इतना इतने लोग नहीं देते, लेकिन देर आर सम पीपल जो कि लाइक फॉर एग्जांपल, यू नो, आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। आई ऑर्डर्ड एन ऑयल, ठीक है, मैंने एक वेबसाइट से ऑनलाइन उससे अपने लिए एक ऑयल मंगवाया, और उस पे लिखा हुआ था कि इफ इट्स गारंटी टू गिव यू रिजल्ट्स, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे यू कैन गेट अ रिफंड ऑल्सो। तो उनकी कोई थी 7 डे पॉलिसी थी या कुछ ऐसे था, लेकिन देर आर सम बिजनेसेस जो कि आपको रिफंड भी देते हैं। तो आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दो, अगर आप रिफंड नहीं भी दे रहे तो आप एक्सचेंज की ऑप्शन दो कि अच्छा साइज, अगर उसको फैब्रिक ठीक नहीं लग रहा, साइज ठीक नहीं लग रहा, तो वो आप अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दो। तो इट्स लाइक एन एडेड वैल्यू। ओके, सो आप नेक्स्ट टाइम फिर उसी ब्रांड को ट्रस्ट करोगे कि ओके इस ब्रांड से मैंने लिया था, लेकिन दे वर वेरी नाइस कि उन्होंने मुझे आफ्टर सेल सर्विस भी दी, नॉट ओनली बेचने के वक्त बट आफ्टरवर्ड्स भी। अच्छा, अनदर वे टू ऐड वैल्यू, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स आपकी, आप देखें एडवर्टाइजमेंट कितने टाइप्स की हो सकती हैं। आपकी बिलबोर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, आपकी टीवी, आपकी सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स में हो सकती है, मैगजीन्स में हो सकती है। तो एडवर्टाइजिंग कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। तो आप अच्छी सी एडवर्टाइजिंग करें अपनी प्रोडक्ट की, इट कैन ऐड वैल्यू टू योर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड improving quality of products,
आप अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी बनाते हैं तो वो तो वैसे ही एडेड वैल्यू है। All right, let's look at two examples. Example one is of a jewelry shop. अब आप एक ज्वेलरी शॉप में जाती हैं for all the girls. It has a very attractive display and उसकी बहुत ही अच्छी गिफ्ट बॉक्सेस में वो आपको पैक करके फॉर एग्जांपल इफ यू बाय अ रिंग तो वो आपको बड़ी अच्छी सी पैकेजिंग में वो उसको बॉक्स में पैक करके देती हैं। उनकी जो शॉप की फिटिंग्स हैं आई मीन व्हेन यू एंटर द शॉप उनकी शॉप फिटिंग्स उनकी लाइटिंग उनकी बड़ा अच्छी सी उन्होंने लाइटिंग दी हुई है उनकी फिटिंग्स जो शॉप की हैं वो बड़ी खूबसूरत उन्होंने शेल्फ्स बनाई हुई हैं डिफरेंट शेल्फ में उन्होंने अपनी चीजें रखी हुई हैं तो ये सारी चीजें आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करते हैं सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एडिंग वैल्यू ठीक है एंड आप शॉप में एंटर होते हो वहां पे आप जो स्टाफ है अब आप एक शॉप में जा रहे हो और उस वहां पे स्टाफ है उसने कोई कोई ध्यान नहीं दिया हुआ कपड़ों पे और बस वैसे ही पहने हुए हैं एज कम्पेयर अगर आप उसको कंपेयर करो कि आप किसी शॉप में एंटर होते हो और उनका प्रॉपर एक यूनिफॉर्म है या उनका प्रॉपर वेरी वेल ड्रेस स्टाफ है तो ऑब्वियसली वो चीज आपको अट्रैक्ट भी करेगी सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एडिंग वैल्यू ठीक है अच्छा जी नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल टू ऑफ अ कॉफी शॉप ठीक है अब कॉफी शॉप में क्या होगा हाउ कैन यू एड वैल्यू यू कैन यूज स्टाइलिश कप्स okay so the environment can be very cozy you can relax there it's a very peaceful environment you enjoy there ठीक है एक vibe create हुई हुई है and you also get some flavored drinks तो आप बड़े बड़े खुश होते हो कि तो मैं अपनी पसंद का फ्लेवर का भी मतलब ड्रिंक ऑर्डर कर सकती हूँ so these are all examples of adding value ठीक है all right so this was our first topic, business activity, and I hope everything is clear. We will be doing the past paper session in the next video of this topic, this chapter, okay? And you can also watch that video. And thank you so much. If you like our content, please subscribe to Abil E School of ONL. Thank you.